अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल रिएक्शन गुरु। आज हम एक और नेपाल का वीडियो लेकर आए हैं जो कि है फोर्सेस से रिलेटेड और आर्म फोर्सेस ऑफ नेपाल और गार्डियन ऑफ हिमालयाज। मतलब ये पहाड़ी इलाकों के होने वाले हैं। और नेपाल आर्मी है या पुलिस, इज इट? आर्म पुलिस फोर्स ऑफ नेपाल। नेपाल आर्मी भी लिखा हुआ है। तो ये अब हमें नहीं पता कि किस टाइप की फोर्स है, ये तो वीडियो में ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले हम काफ़ी वीडियोस देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल पे ज़रूर चेकआउट करें। लेट्स सी दिस वीडियो। गार्डियन ऑफ द हिमालयाज। अच्छा, ये इनका वो स्लोगन होगा। The Armed Police Force of Nepal is an elite paramilitary force tasked with counter-insurgency and security operations in Nepal. It functions as a semi-military wing and occupies the dual role of both military and law enforcement. The fundamental ethos of our force is any task, anytime, Any task, any time. any place. Oh, any place. And its preparedness to shed dew and blood to achieve its motto: peace, security, and commitment. The Armed Police Force of Nepal swung into operation in 2001. Acts of terrorism, insurgency sparked an urgent need for an elite force that would specialize in land warfare and cope with growing incidents of violence. Late Krishna Mohan Shrestha from Nepal Police, the then Additional Inspector General of Police, being promoted to Inspector General of Armed Police Force, was the first chief and the founding father of the force. Initially founded with a humble roster of 15,000 police and military personnel, the Armed Police Force has grown over the years to a mighty corps of nearly 37,000 personnel at the close of 2016. अच्छी बात है यार, होनी चाहिए। Ever since its inception, the Armed Police Force has taken every challenge on its path as an opportunity. Every obstacle has been a chance to prove its mettle. Over the years, Armed Police Force has become the strength of our nation, a concrete backbone, an unwavering layer of national security that stands firm between the peace-loving people of Nepal and its adversaries. The first and foremost duty of an armed police force soldier is to secure and protect the borders of our nation. Yes, borders. The porous border between Nepal and its neighbor is highly prone to territorial disputes and transborder crimes. Activities like illegal immigration, infiltration of anti-national elements, smuggling of arms and explosives, gold, money and drugs, and girl trafficking constantly pose a serious threat to our nation. Joint patrols are carried out in the southern border by the Armed Police Force and the Indian SSB on a regular basis to keep a check on such illegal activities. Each and every movement through the custom checkpoint is thoroughly inspected by our soldiers to ensure that nothing goes free. Our Hawkeyes along the borders send a strong message to the enemies of our country that for our forces, the territories of our motherland are sacrosanct. At war or in peace, at the country's borders or deep within, with the force of arms or with the power of personality, it is this, the gallant armed police force, who stands unwavering at his post to defend his uniform and his motherland and safeguard values of democracy, national integrity and sovereignty. All time ready. When our soldiers are not waging a war, they are training for one. And to crush the enemies of our nation, our soldiers need to possess unmatched physical strength and stamina and razor-sharp tactical strength. वैसे भी ये लोग गोरखाज हैं तो इनका तो वैसे ही स्टेमिना
Yes. दुनिया मानती है इन लोगों को. The Armed Police Force cadets go through rigorous regimen every day to conquer the physical and mental frontier and hone their weaponry skills to perfection. On target man. Tommy gun. The Armed Police Force soldier is carefully sculpted to show utmost calm while being lethally precise. Lethal है. The वाकई spectrum ये लोग. of intense drills that our Training soldiers there. undergo prepares their body and mind to assume responsible leadership during crisis and become masters of warfare. Battle hardened and trained. कितना बड़ा गैप है बीच में. For centuries, Nepal has been known around the world as a peace-loving and tranquil nation. Yeah, I know But that. as the world becomes embroiled in hatred and violence, our enemies have developed many faces. The most dastardly of them is terrorism, where war is waged from the shadows. The sons and daughters of the armed police force are always prepared at the forefront to fight the battle against terror, to fight threats that try to undermine the strength and resilience of our motherland. Our soldiers go through meticulous drills to tackle real-life hostage situations and rescue victims from captivity or in the event ये of बड़ा serious मजे का crimes जाते होते or हैं. ये unrest. पूरी drill होती When है. all seems lost for others, our brave hearts stand and fight against the dark forces. Our soldiers make no compromise on security and integrity of our country and with people who incite violence. ओए होए. क्या quick The code of an action. APF soldier is to always protect those in need. It could be a natural calamity, an unwarranted accident, or a humanitarian crisis. Our soldiers are trained to respond fast during emergency situations and be at the forefront of any national effort. The Disaster Management Training Center in Kuringta is ideally located for the APF soldiers Disaster to में train नहीं कोई. alongside बिल्कुल हर nature. उसके लिए डिजास्टर का भी है. रोप अप लाइन और तमाम हर किस्म की ट्रेनिंग इनके लिए. Given the diverse terrain within which the APF operates, the training must cover a wide spectrum of rescue drills. ये भाई सलूट है ऐसे लोगों को यार. Be it whitewater something expeditions, rope drills, तैयारी or होती है, abseiling. बहुत मेहनत होती है. The real guardians of Those our who live up to nation. the challenge come out not only आपके with a लिए vast हमारे knowledge लिए of हमारे life-saving लिए skills, but also a new level of self-confidence born from facing adversity and overcoming it. With a perfect combination of intelligence, courage, and determination, our soldiers are ready to take on any task, anywhere, at any time. Okay, भाई, this was the whole documentary about the APF. वन ऑफ द बेस्ट. बिल्कुल यार, वो हमने इनकी ब्लू वाला ऐड देखा था पुलिस का, उससे भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है. और मैं तो सोच रहा हूँ हमारी भी गवर्नमेंट को सजेशन लेना चाहिए कि हर जगह पर आर्मी को यूटिलाइज करने से अच्छा एक डिपार्टमेंट ही अलग से इस तरह का फोर्स का बना पैरामिलिट्री दिया. फोर्स जैसे. तो आर्मी पुलिस का मिक्स एक हो, रेस्क्यू टीम भी उसी की, मतलब एक पूरा अंदर बना हो, QRF जैसे होता है Local, ना, हाँ. उस टाइप का एक हो कि वो हर डिजास्टर या हर सिचुएशन में वो सबसे पहले रिस्पॉन्ड रिएक्ट करे. बिल्कुल. तो ये तो आज हमने पहली बार देखा है, ये हमें किसी ने सजेस्ट भी पहले नहीं किया था इस तरह का, हम पहली दफ़ा नाम लेकिन यार ये बहुत ज़बरदस्त, और जिस तरह की इनकी हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी और जिस तरह उनके मिशंस और वो सारी ट्रेनिंग्स दिखाई गई हैं, एब्सोल्युटली अमेजिंग. और वाकई इन लोगों की बड़ी मेहनत है कि ये हर वक्त तैयार होते हैं अपने कंट्री के लिए किसी भी सिचुएशन में.
मुख्तलिफ सिचुएशंस भी उन्होंने बताई है। हाँ, ज़ल्ज़ला आ जाए, आज डिजास्टर पता कुछ चला भी है हो जाए। कि सिर्फ पबजी में टॉप पे नहीं आए, चैंपियनशिप उन्होंने नहीं जीती, यहाँ पे भी रियल लाइफ में भी जो इनके सोल्जर्स नंबर हैं 1 वो को नंबर था। 1 पे ही हैं। तो ऑल द बेस्ट, और पबजी के लिए भी और रियल लाइफ के लिए भी। तो इसी तरह फिर हम वीडियोस बनाते रहेंगे और भी वीडियोस प्रमोट करते रहेंगे। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर है, अल्लाह हाफिज़।